more. This is one of the new our exercise number 9 over here. What we need I just gave you this as a homework in the last class, but fortunately we are here to solve this again. So you can see this, that in this exercise the mass is given to you, right? In this exercise the mass is given to you and they're asking for what? The volumes of the gases, right? So these are two different type of formula that we already have done, right? So let's see what we need to do in this. We already have mass, right? And we need to find out what volume of a gas, right? This is to be identified, and we know that there is no relation between these two variables, right? And we need to go through moles, right? We must have what? Moles. So I can connect this with then moles and then moles with volume, right? So the moles, you can say that is the central part which can connect any type of variable with each other, right? So if the mass and volume have no relation, then we can connect them with the moles, right? This will help you out to find out the mass from volume and volume from mass, right? So right now we have mass, so we can find out the moles of that mass, and then we need to convert that moles into volumes, right? So we have mass. Whenever we found mass, we can use the formula to find out moles. Moles can be find out by mass or molar mass, right? So the mass right now is 167 and the MR of carbon dioxide is 44. So in this way we can find out the number of moles of carbon dioxide, right? So it will be 167 over 44. So it's given us the number of moles 3.795. So these are the number of moles, right? Once you are able to find out the number of moles, then you can easily find out the volume as well. We know that volume of any gas can be identified by when we have moles, and we can multiply it with 24, right? So whenever you have a number of moles, just multiply it with 24, you will have what? The volume, the required volume that you want to find out. But remember, it is only for gases, right? So right now 3.795 are the number of moles and 24 is constant. So just multiply 3.9795 with 24, it will give you 91.08 decimeter cube volume of carbon dioxide. Is that clear, every one of you? Yes. So this is the thing that you need to keep remember. Whenever you don't have a real connection, when you don't have real connection, you can make an artificial one, and you must need to keep remember this, that mass can be converted into moles, and then moles can be converted into volume, and volume can be converted into moles, and the moles can be converted into mass. So you can connect them. Is that clear, every one of you? Yes, sir. चले जल्दी से मुझे ये बाकी 4 क्वेश्चंस आप करके दिखा दें. These are exactly same. You just need to find out the moles from the given mass, and then you need to multiply that moles with 24 to get the volume of the required gas. ठीक है ना? जल्दी से इसको कर ले. उसके बाद हम चलने वाले हैं एक बहुत important section की तरफ, which is more important in past papers, right? तो ओके सो अब देखें, मेन चीज आपके पास आती है अब, सही है ना? तो अभी तक आपने क्या सीखा बच्चों? अभी तक आप लोगों ने ये सीखा कि फॉर्मूला किस तरह यूटिलाइज हो सकता है, ठीक है ना? तो अभी हमने सारे फॉर्मूलाए भी नहीं सीखे, ठीक है ना? हमने अभी सिर्फ 2 फॉर्मूला पे फोकस किया है. इफ द मास इज गिवन टू अस, so we can divide them by mr to get the number of moles, एक ये formula. And if the volume of any gas is given to us in decimeter cube, so we can divide it by 24 to get the number of moles of any gas. और अगर सेंटीमीटर क्यूब में given हो, so we can divide it by 24,000 to get the number of moles. तो ये अभी 2 फॉर्मूला हमने सीखे हैं. तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी वो ये है कि मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय मोल्स if you have MR, and MR is constant. So anytime, whenever you have moles, you can find out the mass.
This is the very much important, you can say that thing कि आपको याद रखनी है ये बात कि मास अगर मोल्स हैं तो निकल जाएगा, क्योंकि एमआर तो कांस्टेंट है, आप निकाल सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। इसी तरह वॉल्यूम किसी भी गैस का डेसीमीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में इजीली निकल सकता है इफ यू हैव मोल्स, बिकॉज 24 इज कांस्टेंट। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है वॉल्यूम, सो किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालना इट्स क्वाइट इजियर इफ यू कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम बेटे, आई एम गुड। सो आई एम सेइंग दैट कि ये 4 फॉर्मूलाए अब तक हमने पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इन सबको इंडिविजुअल भी परफॉर्म किया कि इसके क्वेश्चंस किए हमने, इसके क्वेश्चंस किए, फिर हमने इसके क्वेश्चंस किए और इसके हमने क्वेश्चंस अलग अलग किए। तो इंडिविजुअली हमने सीखा कि इन फॉर्मूलाए को किस तरह यूज करना है। और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में अगर कोई चीज गिवन है तो ये वॉल्यूम होता है, ग्राम में कोई चीज गिवन है तो वो मास होता है, एमआर निकालना हमने सीखा, गैसेस के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना हमने सीखा। तो ये डिफरेंट चीजें हमने सीख ली। तो होपफुली कि अब आपको ये बात समझ में आती होगी कि डेसीमीटर अगर लिखा हुआ कहीं नजर आएगा तो आप बोलेंगे सर ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है ना। अगर किसी गैस का वॉल्यूम अगर आपको गिवन हो तो आपको आइडिया होगा कि ये वॉल्यूम ऑफ गैस ही लिखा हुआ है। अगर ग्राम में कोई चीज लिखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि सर ये मास गिवन है, मास गिवन है, मोल्स निकाल सकता हूँ एमआर से डिवाइड करा के, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर आपके जहन में अब तक फ्रेश हो चुकी हैं, अब रेडी हो चुकी हैं कि हाँ मुझे ये बात समझ में आ गई, तो उसके बाद मास से इस तरह से हमने वॉल्यूम भी निकाला। ये वाले 2 फॉर्मूलाए को हमने यूज करते हुए मास से वॉल्यूम भी निकाला, और इन 2 फॉर्मूलाए को यूज करते हुए हमने वॉल्यूम से मास भी निकाला, ठीक है ना। तो फिर वो फर्स्ट स्टेप से हम सेकंड स्टेप पे गए, हम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ गए कि हाँ अगर हम सिर्फ और सिंगल स्टेप कर सकते हैं तो हम 2 फॉर्मूलाए भी यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या होता है जिसमें हम इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। अब तक हम क्या कर रहे थे, जिस चीज का मास गिवन था उसी के मोल्स निकाले, उसी का वॉल्यूम निकाला, जिसका वॉल्यूम गिवन था उसी के मोल्स निकाले, उसी का मास निकाला। तो हम अभी तक एक ही चीज पे खेल रहे थे। अब हम एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जाएंगे। फॉर सपोज अगर आपके पास कुछ इस तरह का रिएक्शन है, देखें H2SO4 reacting with 2NaOH giving you Na2SO4 plus 2H2O. This is one of the equation for suppose now, and I just gave you the mass of NaOH. For suppose you have 30 grams NaOH. You have 30 grams NaOH, and I ask you the mass of sodium sulfate. So now this is the different scenario. This is the paper pattern questions, right? Now you're here where you need to understand this क्या वो दे कुछ और रहा है, पूछ कुछ और रहा है. So this is known as what? Stoichiometry, right? The relationship between two different substances, right? So the mass of sodium hydroxide is actually given to you, and the mass of sodium sulfate is actually asking from you. So we will see this कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपने याद रखने हैं बच्चों 3 स्टेप्स। पहला स्टेप आपको क्या याद रखना है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो थ्रू मोल्स। पहले तो मोल्स निकाल लो। मोल्स निकाल लोगे ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी, बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि मोल्स से हर चीज का रिलेशन है। विदाउट मोल्स रिलेशन नहीं है। मोल से वॉल्यूम में जा सकते हैं, मोल से मास में जा सकते हैं, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जा सकते हैं, मोल से कॉन्सेंट्रेशन में जा सकते हैं, मोल से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तो कुछ नहीं आता, पहले मोल्स निकाल, सबसे पहले मोल्स निकाल तो आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। सो राइट नाउ वी हैव मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो मोल्स भी हमारे पास फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो मोल्स हमारे पास किसके निकलेंगे बच्चों, मोल्स हमारे पास निकलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, बिकॉज हमारे पास मास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। सो इफ यू हैव मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप एमआर भी किसका यूज करोगे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज करोगे, ताकि आपके पास सारी चीजें सोडियम हाइड्रोक्साइड की हो, तो मोल्स भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के आ जाए, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि इक्वेशन में ये 2 लिखा हुआ देखते हैं तो ये एमआर में ऐड करा देते हैं। बच्चों ये जो 2 लिखा हुआ है इट इज ओनली फॉर द बैलेंसिंग, this 2 is only for the balancing, so you need to keep remember MR सिर्फ फॉर्मूले का निकलेगा, NaOH का 2 उसमें ऐड नहीं होगा, उसमें 2 ऐड नहीं कराना हमें। तो MR होता है सिर्फ NaOH का, सिर्फ NaOH का MR निकाल सकते हो आप। उसके अंदर जो 2 है वो एक्चुअली बैलेंस इक्वेशन करने के लिए लगाया हुआ है, उसको आप ऐड ना करें MR में, ठीक है। तो व्हाट इज द मास गिवन टू अस, इट इज 30, and what is the MR of NaOH is actually 23 plus 16 plus 1 is 40. 40 is the MR of
MR ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो 0 से 0 गया और बचा 3/4, तो 3/4 कितना होता है बच्चों? 0.75 मोल्स आ गए, राइट? जी सर, Yes, राइट। sir. तो ये मोल्स हमारे Yes, पास आ sir. गए। The problem is this बच्चों कि we want the mass of sodium sulfate. We want the mass of sodium sulfate, and right now we have moles of sodium hydroxide. So अगर आपको मास चाहिए सोडियम सल्फेट का, तो आपके पास मोल्स भी होने चाहिए सोडियम सल्फेट के। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं, हमें चाहिए सोडियम सल्फेट के मोल्स, ताकि उसी के मोल से उसके एमआर को मल्टीप्लाई कराएं तो और मास आ जाए। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा बच्चों रिलेशन। सो द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कीप रिमेंबर कि पहले मोल्स निकाल लिए, अब लगाओ रिलेशन। बच्चों रिलेशन हमेशा लगता है गिवन और रिक्वायर्ड के दरमियान, the one which you have already and the one you need to find out. So the one which you have already is what? NaOH. आपको जो क्वेश्चन में गिवन किया गया है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, and the thing which is asked from you is sodium sulfate. So this is the two things. अब इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का कोई काम नहीं है, अब इसके अंदर वाटर का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो ना तो दिया गया है ना ही पूछा गया है, तो उसका रिलेशन नहीं बनेगा। जो दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो पूछा गया है सोडियम सल्फेट, उन दोनों का रिलेशन बनेगा, ठीक है ना? और सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लें कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.75 मोल्स हैं और यू नीड टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, राइट बच्चों? जी सर, राइट। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन भी देखना जरूरी है, क्योंकि इक्वेशन आपको बता रही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने होंगे तो सोडियम सल्फेट कितना बनेगा। तो अगर सोडियम इक्वेशन नहीं लगाओगे तो फिर तो आपका रिलेशन बनेगा ही नहीं ना, तो इक्वेशन से रिलेशन लगाना जरूरी है। तो यू कैन सी दिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वेशन में जो है वो 2 है और सोडियम सल्फेट इक्वेशन में 1 है। यू कैन सी दिस, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ 1 होना चाहिए, है ना? और यहाँ 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। So the relation is already mentioned over there in the equation. It is 2:1. Now we just need to multiply them, cross multiply them. So ये आ गया 1 यहाँ, ये आ गया 2 यहाँ. So in this way, the 2x become 0.75 and the x become 0.7/2. So what will be the number of moles, बच्चों? It will be 0.35। 0.375 होने चाहिए। जी सर, सॉरी। 0.375. Now what is x? X is now the moles of sodium sulfate. ठीक है ना बच्चों? अब हमने मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट निकाल ली हैं, तो हमारे लिए मास निकालना कौन सी बड़ी बात है? आप तो मास निकाल ही सकते हैं हम। वी नो दैट अगर आपको मास निकालना है तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपके पास मोल्स आ जाएं तो मोल से मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं। मास निकालने के लिए वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई मोल्स विद द मॉलिक्यूलर मास। और क्योंकि मास हमें चाहिए सोडियम सल्फेट का बच्चों, so we must have the moles of sodium sulfate बच्चों, and the MR should be of sodium sulfate बच्चों। अब ऐसा नहीं है कि किसी और की कोई और चीज आपने किसी से मल्टीप्लाई करा दी, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? तो अगर आपको मास सोडियम सल्फेट का चाहिए तो मोल्स भी सोडियम सल्फेट के होने चाहिए, which is 0.375 right now. And what is the MR of sodium sulfate? Let's see. 142. Let's see, 23 plus 23 plus 32 plus 16 into 4. तो ये कितना हो गया? 46 plus 96, so ये हो गया 142. You are absolutely right. So you need to multiply 0.375 with 142. बच्चों क्या आंसर आने वाला है? 53.25. 53.25. So it is 53.25. And what is the unit of this? 53.25 Grams. 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 So this is the mass. Bachcho, this is the type of question that examiner can ask you in the exams. So this सर, एक is सवाल very है। much. जी बेटे, सर, हम रिलेशन को रेशियो भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल मतलब बोल मोल सकते रेशियो। हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इट इज मोल रेशियो, राइट? ओके सर। आसान अल्फाजों में करने के लिए मैं बस इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट मोल्स इन एनी क्वेश्चन, and in the second one you need to find out the relation, जिस जो चीज आपको चाहिए, and the third one you can find out the mass or volume or concentration whatever, जो भी आपको required variable होगा क्वेश्चन में, आप वो फाइंड आउट कर सकते हो थर्ड स्टेप में, ठीक है ना? सबसे पहले तो मोल्स निकाल लो, और जिस चीज के आपको जो है मास चाहिए या वॉल्यूम चाहिए, फिर उसके रिलेशन लगा के मोल्स निकाल लो, और उसके बाद फिर आप लास्ट स्टेप में वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम निकाल लो, मास चाहिए तो मास निकाल लो, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। Is that clear? Yes, sir. यस सर, क्लियर। Let's one of the question from past papers. Let's see
क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? Let's see. There is a theory questions. You can see this. So the first question is for you. Let's try this. The question number 1, बच्चों, you need to solve 1 and 3. अगर कोई बच्चा 1 कर ले तो फिर वो 3 भी कर सकता है, ठीक है? Let's see. बस आपने जो है वही 3 steps follow करने हैं जो मैंने आपको बताए. You just don't need to lose any step of them, right? ये क्या कह रहा है आपसे? What is the maximum mass of phosphorus? Here it is, phosphorus that can be made using 300 grams of silicon dioxide. ये रहा silicon dioxide, ठीक है ना? So they gave us the mass of silicon dioxide and they're asking for the mass of phosphorus, right? So the first thing that we need to do is moles. तो moles किसके निकालेंगे? The mass given to you. Mass किस चीज का given है? Silicon dioxide. Yes, so it is mass over MR and the mass is actually 300 and the MR of silicon dioxide is 60. SiO2, Si is 28, oxygen is 16 into 2, so it gives you 60. So when 300 divided by 60, it will give you 5 moles. Moles आ गए, ठीक है ना? अब ये moles जो हैं ये silicon dioxide के हैं, but हमें चाहिए mass phosphorus का. So जब phosphorus का mass चाहिए, so we must have the moles of phosphorus as well. हमारे पास phosphorus के moles भी होने चाहिए, ठीक है ना? तो अब उसके लिए लगाएंगे हम relation. और रिलेशन किसका लगाएंगे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो कि हमारे पास ऑलरेडी है और फास्फोरस का जो कि हमें चाहिए. सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मोल्स हमारे पास 5 हैं और हमें फास्फोरस के चाहिए, जबकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यू कैन सी दिस दैट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज 6 and phosphorus is 1. So when we cross multiply them, so we will have the number of moles of phosphorus, which is actually x is equals to 5 over 6 will give you almost 0.833, right बच्चों? जी सर. Yes, sir. Right? जी सर. Then the third thing is Yes, sir. required thing, which is mass. So mass निकालने के लिए moles into MR. तो moles sir. हमारे पास होने चाहिए उसके जिसके हमें मास निकालना है. मास निकालना है फास्फोरस का, तो फास्फोरस का मास निकालने के लिए फास्फोरस के मोल्स which is 0.833 और MR कितना है फास्फोरस का? You can see this, it is 31 into 4, so it will give you 124. ठीक है बच्चों? तो आप देख सकते हैं when 0.833 5 over 6, right? 0.833 into 124, it will give you 103.33 grams. ये आया बच्चों आंसर आप लोगों का? Yes. जी सर. सर लेकिन इसमें हमने क्या कहते हैं 3 डेसिमल प्लेस पे क्यों लिया? आपकी मर्जी है, आपको जितना लिखना है लिख दें, ऊपर मेंशन नहीं है. ओके सर. ठीक है. देन आपके पास ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी सेम इसी तरह सिचुएशन है. व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ सिलिकॉन? ये मालूम करना है हमें. दैट कैन बी मेड फ्रॉम 300 ग्राम ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. अगेन सबसे पहले मोल्स निकाल लें. मोल्स के लिए मास ओवर एमआर, द मास इज गिवन टू यू एंड द एमआर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज 60, so it will give you 5 moles, right? And if the relation in the equation is same, देखिए दोनों 1:1 है, इक्वेशन में दोनों 1:1 है, तो इसका मतलब है सिलिकॉन के मोल्स भी आपके पास 5 ही होंगे. तो अगर ये मोल्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड के हैं तो मोल्स ऑफ सिलिकॉन भी आपके पास 5 ही होंगे, क्योंकि दोनों का रिलेशन इक्वल है. ठीक है ना? अगर आप करना भी चाहें रिलेशन तो कर लें, कोई मसला नहीं है. अदरवाइज दोनों का रिलेशन सेम ही है तो जरूरत नहीं है करने की. देन मास निकालने के लिए वी जस्ट नीड टू गो थ्रू फ्रॉम मोल्स इनटू एमआर, and the moles is 5 over here and the MR of silicon is 28, so it will give you 140 grams. Is that right बच्चों? जी सर. चलें, तो Yes. here we have one more question, number 5. So you need to solve question number 5 now. पहले आप ट्राई करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व इसको करते हैं, because I need to have a start another class. So you can see here bacho, what we need to do, again the same thing, the 3 marks question. You need to do first of all moles. So the mass is given to you 39.2 gram of iron, so mass over mr. So when you do this you will get the number of moles of iron, right? So in this way 39.2 divided by 56, it's give you 0.7 moles of iron. Now these are the number of moles of iron, but we need to find out the maximum mass of iron oxide, right? So
for this, we need to find out the moles of this, definitely. So we have iron. We need to find out iron oxide, right? So right now we have 0.7 moles, and we need to find out the moles of iron oxide. And the relation in the equation is 3:1. So this will go over here, this will go over here. So this will be X is equals to 0.7 divided by 3 will give you 0.233 moles of iron oxide. Now we can find out the mass of this. To find out mass, we should have moles, and we got this, and then MR. So the MR is 56 into 3 plus 64. So let's see what's the MR. We 160. 160. 160 is MR, right? Yes, sir. 56 into 3, 168 plus 64. It is 232 bit. 232 into 0.233 will give you 54.05 grams answer. Right. So this is जी sir. पास आयरन का था मास, हमने उससे आयरन ऑक्साइड का मास निकाल लिया. अब उसी आयरन के मास से we need to find out the volume of hydrogen, right? So we already have moles of iron, which is 0.7 moles. So we can find out the moles of hydrogen as well with the same thing. So iron है, hydrogen निकालना है, iron 0.7 है, hydrogen चाहिए, और relation इनका है 3:4 का. So this 4 over here, this 3 over here. So this will be 3x. Yes sir. 0.7 into 4 जी बेटे. सर हम इसमें वो आयरन ऑक्साइड का वाला जो है हम ले सकते थे जो है रिलेशन आयरन ऑक्साइड के साथ रिलेशन ले सकते थे. आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जो चीज आपको गिवन हो आप उससे कोशिश करें करने की. तो आयरन ऑक्साइड तो खुद डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर ना, तो फिर आप उससे क्यों निकाल रहे हैं. ठीक है जी सर, ठीक है सर. तो आपके पास मोल्स आ गए बच्चों कितने, 0.933. and if you want in with decimeter cubes you can multiply it with 24, right bachcho? If you multiply it with 24 you will get what, 22.39 decimeter cube volume of hydrogen gas. Is that clear, every one of you? Yes. Yes, sir. So this is the thing that you need to solve in what, in moles. Moles के अंदर